नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉट टॉक पर। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिनों में फिर से विश्व में घटनाक्रम चेंज हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, फिर हमने बात शुरू करी कजाकिस्तान की, और कुछ दिनों में आपने देखा होगा हाल ही में ही यूक्रेन रशिया की टेंशन काफी बढ़ गई है। वेस्टर्न फोर्स, वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। और क्या होने जा रहा है, क्या इशू है, रशिया क्यों इन्वेड करने का ट्राई कर रहा है क्रीमिया को या यूक्रेन को। क्रीमिया को तो वो ऑलरेडी कर चुका है। तो इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमने बेहद ही खास मेहमान हमारे एयर वाइस मार्शल प्रणय सिन्हा जी को आमंत्रित किया है। वो विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है। ही इज पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड एलुमनाई फ्रॉम डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। एंड उनको हमने क्यों आमंत्रित किया है? दोस्तों, उसका रीजन है कि ही हैज सर्व इंडियन एयर फोर्स फॉर 35 years। उनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है टू वर्क ऑन द इंडियन एयरक्राफ्ट, रशियन एयरक्राफ्ट जो कि हमने वहां से इंपोर्ट हम करते हैं। MiG-21, MiG-29, Su-30, Su-MKI, उनका मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है। उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग ली है। ही हैज वर्क विद द रशियन, ही हैज बीन इनटू रशिया सो मेनी टाइम्स। रशियंस को बहुत क्लोजली उन्होंने वॉच किया है, बहुत देखा है रशियंस को, बहुत बार वहां पे गए हैं। तो इनसे अच्छा हमारे शो में कोई गेस्ट हो नहीं सकता था जो बताएं कि रशिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उनकी लैंग्वेज, पुतिन क्या कहते हैं, उनके डिफेंस जो वेटरन्स हैं उनसे बात होती है तो वो क्या कहते हैं। तो इन सभी चर्चाओं पे बात करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है प्रणय सिन्हा जी को। सर, बेहद स्वागत है एंड थैंक यू, वेलकम, वेरी वार्म वेलकम सर। Thank you, Pushpkar, for inviting me. And chalo, let's talk softly on your hard talk. थैंक यू सर। माय फर्स्ट क्वेश्चन बिगिन विद कि ये व्हाट इज यूक्रेन क्राइसिस, और रशिया क्यों ट्राई कर रहा है यूक्रेन को इन्वेड करने का? ये हो क्या रहा है सर? बॉर्डर पे थाउजेंड्स सोल्जर्स इकट्ठे हो रखे हैं, बेलारूस के साथ इनका मतलब वॉर गेम चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है। तो क्या है सर, ये यूक्रेन क्राइसिस क्या है? पुष्पकर, इसको समझने के लिए दो चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा कि रशिया जो है अभी भी इसका माइंडसेट जो है इट सेज दैट इट वांट्स, इट डिजायर्स दैट इट्स फॉर्मर जितने इसके फेडरल रिपब्लिक्स हैं जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर के पार्ट थे, उनके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस बना रहा है। इट वांट्स टू मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस, फियर ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर देम। एंड इसका दो रीजन है, स्पेशली द कंट्रीज विच आर इन नेबरहुड, एकदम इमीडिएट जो नेबर है ना इसके, उसके फॉर एग्जांपल हमने कजाकिस्तान की बात किया था, तो कजाकिस्तान, देन जॉर्जिया, देन यूक्रेन एंड बेलारूस। सो इन सब कंट्रियों पर उसका खास पकड़, ही वांट्स टू रशिया वांट्स टू मेंटेन खास पकड़। टू रीजंस। एक, इन सब कंट्रीज में यू विल फाइंड देयर इज अ स्लाव पॉपुलेशन। स्लाव जो रशियन, ओरिजिनल रशियन के जो वो है, जैसे चाइनाज में हान है, तो दे आर द स्लाव पीपल। ओके, सो ये स्लाव कनेक्ट है। इन सब कंट्रीज में यू विल फाइंड देयर आर सम पॉपुलस व्हिच इज टोटली रशियंस एंड ओ देयर एलिगेंस टू द रशियंस। एक चीज तो कल्चरल कनेक्ट। सेकेंडली, रशिया ऑल्सो wants that इन सब कंट्रीज के पास बड़े खास natural resources हैं, very good natural. You have seen Kazakhstan, if you remember, it is very rich in oil and gas and uranium. Similarly, Ukraine is the granary. Plus इसके पास कोल है, एंड खास करके जो ईस्टर्न रीजन है यूक्रेन, जिसको डोनबास बोलते हैं, जिसमें जहाँ पे रशियन पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे लॉट ऑफ फैक्ट्रीज आर देयर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज, लाइक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहीं बनते हैं, एंटोनोव ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, like Indian Air Force has, you have named, the Indian Air Force has AN-12 earlier, now AN-32, all are made of Ukraine, यहीं से, ठीक है। And इसमें इसकी महारत है, they are very specialized this thing. Similarly, I'll just tell you, like Belarus, that has got a very good electronic warfare capability. So coming back to Ukraine, so what happened is, under the present जो president है, Mr. Volodymyr Zelensky, so he is not pro-Russia.
And हम्म, ये आदमी चाह रहे हैं, he wants that to become member of European Union and हम्म, also wants to go for the NATO. अब NATO हम्म, अलायंस के लिए, हम्म, एंड रशिया के लिए ये तो इट इज अ सैक्रिलेज, ये तो महापाप है कि भाई आप मेरे नेबरहुड में बैठ के इफ यू कॉल द वेस्टर्न कंट्रीज, देन आई विल नॉट अलाउ, आई कांट हम्म। टॉलरेट NATO. We will see why. So it doesn't want any NATO forces on its western border. It wants a rollback. सब बिल्कुल Okay. ठीक, बट जैसे आपने अभी बताया कि नेटो में ज्वाइन करना जा रहा है यूक्रेन एंड रशिया, डर रहा है, तो व्हाई दिस फियर ऑफ नाटो? आफ्टर ऑल रशिया, यू फील, आई मीन एवरीवन इज अवेयर रशिया इज मिलिट्री पावर, तो रशिया को ऐसा क्यों डर है कि ये नाटो में चला जाएगा तो कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाएगी? तो आपके क्या व्यूज हैं सर? हाँ, देखो, मिलिट्री पावर, यू आर वेरी करेक्ट एंड वेरी गुड क्वेश्चन. इसको इस तरह से समझो कि रिमेंबर कजाकिस्तान में हम लोग ने कलर रिवोल्यूशन की बात की थी. हाँ जी, हाँ जी। रिमेंबर कलर रिवोल्यूशन? ओके. सो व्हाट इज दैट कलर रिवोल्यूशन? कलर रिवोल्यूशन क्या है कि इट इज बेसिकली, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर योर व्यूअर्स, दैट इट इज बेसिकली फंडेड बाय द CIA, US, overtly and covertly, and by the George Soros Group, Open Society Foundations. इनका मेन पर्पस है टू डिस्प्लेस अथॉरिटेरियन regime mainly of erstwhile Soviet republics, ex-communist countries, and to usher in, to इनको यहाँ पे लाना है more market friendly liberal democracy. This is the main इनका, so that is one reason. Plus, so what is the fear is that if NATO comes, एक तो वो forces लेके आ जाएंगे अपने, which will be breathing on the neck of ये Russia, which is always a khatra for them. And secondly, they can overthrow the regime of even of USSR. Okay, that is the main fear. Let's to explain your viewers, थोड़ी सी और एक दो लाइन मैं बताना चाहता हूँ. Sure. If you remember, we had spoken that in Georgia, the first color revolution in Georgia took place in November 2003, जिसका नाम था Rose. Okay. Rose. Okay. So what happened when this protest started? Protest can start for anything, price rise या कोई भी reason हो, but ultimately it boils down to overthrow the leader who is a ex-Soviet champion, communist, hardcore communist dyke wala. And so, and the youngsters and the new population without internet and all the market friendly चीजों से, they are very बोलते हैं, they are very attracted towards the Western countries, so they want to become member of European Union or NATO के लिए. ये इनकी वो है ख्वाहिश. Plus in this Rose revolution which took place, this Edward Swarnjo was overthrown. इसको हटा दिया गया. Okay. ठीक है. And this happened in Georgia. Okay. And this was very much, it shocked the Russia. So this happened in 2003. But what happened when this chap, the new chap, when he wanted to join European Union, that was the time, that was in around say 2008 only. So that is the time. That is the time this Russian attacked Georgia. And they attacked, full-fledged they attacked, and they occupied its two regions, Abkhazia and South Ossetia. Okay. And they controlled, and they stopped, the bid was foiled. They stopped Georgia from going for the NATO. एक उन्होंने रोक दिया. Then this was 2003 and 2008 में इन्होंने ये कर दिया, when they were trying to go for the NATO ship. Secondly, in Ukraine, now coming to Ukraine, Ukraine में the revolution took place, Orange Revolution took place in 2004, and that time the strong man, the communist man Viktor Yanukovych was overthrown. Okay. बट अगेन ये क्या कम्युनिस्ट कंट्री में क्या है, ये जाते हैं फिर से आ जाते हैं.
because of Russian. So Russian again propped up and he came back in somewhere in 2009. But then he rejected Okay. he rejected the popular demand of integration with EU. That happened in 2013. And so Russia said, oh, now again the red line has been crossed. So, and this time Yanukovych was thrown out. He ran away from the country and now he sits in the exile in Russia. Russia bhag gaya. So at that time Putin was there. He said nothing doing. He again attacked and Crimea. And Crimea is actually a island. Bolo island to nahi hai, matlab it's like island. There's a Bombay there. It has got two land strip which is connected with the main Ukraine and sits in the Black Sea. Oh, okay. Usko, and they annexed, and without firing a bullet, it took over, annexed the Crimea. Crimea को ले लिया इसने. कैसे सर, मतलब हाउ दिस इज पॉसिबल? इतना जैसे रशिया ने फाइट किया, आपने जैसे बताया, तो क्रीमिया को इन्होंने कैसे, मतलब विदाउट एनी वॉर, विदाउट फायरिंग एनी शॉट, बुलेट, कुछ नहीं, कैसे ले लिया? आप बताएं इस पे कुछ प्रकाश डालिए सर. Okay. See, what happened is that you know that मैंने बोला ना कि स्लाव हैं और बहुत जगह इनके रशियन पॉपुलेशन भी. इनफैक्ट क्राइमिया क्या है? इट इज नथिंग बट इट्स अ बेस. इट्स अ बिग नेवल बेस. इनके ब्लैक सी का, रशियन ब्लैक सी में जो फ्लीट है इनका, ब्लैक सी फ्लीट, वो वहां पे उसका सेवास्टोपोल में इनका बेस है. एंड नाउ सेवास्टोपोल इज फेडरल इन क्राइमिया ओनली. क्राइमिया में दो पार्ट है, बट बोथ इस सब में मेजोरिटी सिर्फ रशियन है. रशियन सोल्जर्स इज रशियन बेस. लाइक यूएस का अगर बेस मानो इंडियन ओशन में, यू मस्ट हैव हर्ड डियागो गार्सिया. इट्स अ बेस ऑफ यूएस. ठीक है. हम लोग का तो अपना कंट्री का है, तो अपना बेस इंडियन ओशन में अंडमान एंड दिस. सो दिस आर द बेसिस. एंड फॉर पावर प्रोजेक्शन, नेवल पावर प्रोजेक्शन इन मेडिटेरियन सी, दिस इज द place from there the fleet can roll out. Okay. So Russia, so what the Russian did, just said भैया शुरू हो जाओ. तो इनके जो सोल्जर्स बैठे थे, इनके जो नेवल सोल्जर्स थे, they just went out and took over. भाई इन्हीं के अंडर था, तो एडमिनिस्ट्रेशन फुल कंट्रोल एरिया विदाउट फायरिंग. बोला कि भैया ऐसा है, क्रीमिया नाउ इज अंडर अस. बिल्कुल. बस. सो क्रीमिया केम अंडर अस. So this so this is the interesting. अच्छा, एक और चीज बता दूं. हाँ जी. What I would like to hear say that this has been demonstrated many times by Russia. ये बताना चाह रहा हूँ कि रशिया बोलता है कि भैया तुम अगर नाटो के साथ जाने की कोशिश करोगे, खास करके ये कंट्री जॉर्जिया, कजाकिस्तान. देखो अभी तुमको याद है कजाकिस्तान में जैसे ही धमाल हुआ, हाँ जी, अगेंस्ट नूर सुल्तान नजरबायेव, यू रिमेम्बर? ये भी बूढ़ा कम्युनिस्ट. तो इसको भी अब नाउ रशिया ने क्या किया, इस बार उसने खेल अच्छा खेला. रशिया ने बोला भैया हमको पता है तुम बूढ़े हो, ठीक हो यार, अब तुम जाओ. इट सैक्रिफाइस्ड इट. और अपना नया चेला को लेके आ गया. इसका नाम है कासिम जोमात टोकायेव. बिल्कुल. हाँ, पपेट ने मतलब प्रेसिडेंट लेके आ गया, बिकॉज इट डजंट वांट टू लूज कजाकिस्तान, एंड कजाकिस्तान इज नाउ अगेन साइलेंट. यस. सिमिलरली हाँ, तो होता क्या है कि तुम बोले ना कि इसमें पुतिन को खुद को डर है कि भैया अगर ये कलर रिवोल्यूशन वाले पास में आ गए, नाटो वाले आ गए, तो कल को मेरा चेंज ऑफ गार्ड. एंड रशिया में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए अगेंस्ट पुतिन. सो पुतिन, एंड आफ्टर इकोनॉमिक स्लो डाउन, पुतिन अपने देश को एक करने के लिए, एंड ऑल दिस अथॉरिटेरियन लीडर्स, इनका एक ट्रेट है, दे स्टार्ट ऑन नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म. तो ये इंपीरियल नेशनलिज्म, ये आवाज दे रहे हैं कि भाई पुराना जैसा हमारा महान रशिया था, वैसा रशिया, ज़ार के टाइम का रशिया, ऐसा रशिया होना चाहिए. इंपीरियलिज्म, दिस इज द थिंग. एंड उसने ये दिखा दिया, यूक्रेन का क्रीमिया को छीन के उसने दिखा दिया. And it's very important because Russia is having a slow economic down, so it wants to project as a strong power, a strong military power and strong country also. And इसीलिए तुमको याद होगा what happened is
when the German naval chief, Admiral K. Skonabak, when he recently he visited India and IDSA Institute, he made a very important statement that yes, that Crimea should continue to remain with Russia, and this is important. This statement he made. तो सर अभी जैसे आपने हर जिक्र किया है रशियन नेवल चीफ का, तो इतना सिग्निफिकेंस जर्मन नेवल चीफ है, उन्होंने अभी जो एक स्टेटमेंट दी है जिसका आपने भी जिक्र किया है, तो इसका इतना सिग्निफिकेंस क्यों है इस चीज का? मतलब ऐसा भी देखा जाता है कि वो पॉलिटिकल लेबल स्टेटमेंट पास किया है, चाइना को भी लेके पास किया है, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या है, व्हाई दिस इज ऑल हू एंड क्राई इस स्टेटमेंट के पीछे जो जर्मन नेवल चीफ ने दिया है? देखो, जर्मन नेवल चीफ है, तो ये बहुत सोची हुई रणनीति के तहत हुई होगी. इट्स वेरी प्लान्ड स्ट्रेटेजी. इट इज नॉट ऑफ द कफ. ऐसा नहीं है कि जर्मन नेवल चीफ आया और बोल दिया. एक सोल्जर है तो उसने अपने मन की बात कही. नहीं, ये कतई नहीं है. He made three statements. He said, world should forget about Crimea. It's a part of Russia and let it be there. Now, एक और important चीज मैं बताना चाहूंगा तुम्हारे दर्शकों को कि what happened जब क्राइमिया को इसने यूक्रेन से ले लिया रशिया ने 2014 में. So that time it came under Russia. US क्या करता है, जो भी इससे झगड़ा करता है उसके ऊपर वो सैंक्शन काटसा इसने लगा दिया, सैंक्शन कर दिया. दैट मीन्स इससे आप कोई भी चीज खरीदोगे तो आपको भी ये कड़ी पार करेगा. यू विल बी आउट ऑफ द सीन. ठीक है, आप पर भी. सो आई विल कम टू दिस. सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ही मेड इज दैट Putin deserves respect. Putin is a world-class leader. He should be given that respect. He should not be seen as a chota mota. This is very important. He meant that you should not undermine the Russian nation, Russia. And third, very statement, very important, significant, important. Here, US and NATO, तुम लोग only you consider Russia as the number one enemy. But actually, the emerging threat to the whole world order is China. So that's what it said that कि listen, तुम्हारा ध्यान चाइना की तरफ ले जाओ, रशिया को क्यों मार रहे हो? ये तो बेचारा ऐसे ही ये है इसको. So he said this is very important. And now another he said that कि भाई इसको क्राइमिया को रेगुलराइज कर दो, रिकॉग्नाइज कर दो और सैंक्शन उठा लो. इसके पीछे एक और कारण है. See, what has happened is Germany takes majority of its energy के लिए गैस पावर स्टेशन रन करने के लिए तहाँ पर from Russia. 70%, 60%. Nordstream 1, Nordstream 2 भी इन्होंने भी लॉन्च किया है. Yeah, very good. Nordstream 1 and Nordstream 2. Okay, Nordstream 1 जो है, it comes via Ukraine. So नॉर्थ स्ट्रीम से जो गैस मिलती है तो वो ना यूक्रेन से जाता है, तो यूक्रेन उसमें टैक्स दे देता अपना, तो बहुत महंगी गैस पड़ाती. तो भाई एंजेला मर्केल जब थी, जो सी वॉज द चांसलर, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा है कि लेट्स हैव सस्ता गैस लेके आते हैं एंड वी विल फंड द प्रोजेक्ट. 11 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है नॉर्थ स्ट्रीम 2, विच इज नाउ गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम रशिया टू थ्रू बाल्टिक सी से ऊपर से जाके नीचे सीधे जर्मनी पे चली जाती है. ओके, सो एंड व्हाई ही सेइंग दिस नॉर्थ स्ट्रीम, बिकॉज इनको डर है कि अगर इस कुछ ये हो गया तो हमारा ये जो एनर्जी लाइन जो है ये गड़बड़ हो जाएगा. अच्छा, गड़बड़ हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, जर्मनी बैठ जाएगा. वाई जर्मनी बैठ जाएगा? बिकॉज जर्मनी इज फुली डिपेंडेंट ऑन दिस. ओके, एंड जर्मनी ने अंजेला मर्केल ने एक और हास्यास्पद एंड वेरी मतलब रेट्रोगेटिव स्टेप ले लिया. दैट स्टेप वाज दैट बिकॉज ऑफ फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कांड हो गया था, जो लीक हुआ था, तो जर्मन में दे वेंट हाइपर ओवर द बोर्ड एंड दे सेड कि ऑल दिस न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुड बी क्लोज्ड डाउन. So they have, you must have धड़ा अभी 1-2 बाकी हैं, सब इन्होंने क्लोज डाउन कर दिए. Now
world is the France, other country, India also will go more for the nuclear power, because this is, if not green, it is clean energy. Exactly. Okay, Exactly. it's a clean energy, not dirty energy like coal fired. Cool. अब जर्मनी क्या कर रहा है? It's going on coal fired thermal power station है उसके, coal fired, and creating more pollution, creating more nuisance. So this is the pagalpan of a great nation of Germany. So this is the thing. So they are fear of this Nord Stream 2 कहीं खतरे में आ जाए. Though again I am telling you, Katsa के इसको they have not included. Waiver of has been given by US on Nord Stream 2. They have already given. Oh, okay. Germany is the one of the richest country of EU. EU का सबसे richest member है. तो Germany and तो अगर richest member है, पैसा वाला, तो यार कौन उसको छोड़ेगा भाई? फंड तो यही देता है. तो nobody wants to leave Germany. तो उसको waiver दे दिया. Similarly, we will be also getting waiver on S-400 Triumph. Oh, that's against good to Katsa. know. हम लोग Really. ये बात चल रही है, क्यों इनको भी झक मार के देना पड़ेगा. बिल्कुल सर. But that we will see. So, अच्छा, another thing, feeling, because now you are talking about Germany. Germany ने pro Russia, though after going back, German chief has resigned. मतलब उनको resign देना पड़ा. But ये सब all part of the game होगा. अच्छा, जर्मनी में एक और चीज, अभी नया जो चांसलर है ओलाफ सॉल, ये 8 महीने ओल्ड है. हाँ जी. He is heading 3-party coalition. अब इनका भी coalition, इनका coalition धर्म क्या है? इनका coalition, अच्छा, इनके 3 coalition, 3 party, 3 direction के. एक is pro Russia, एक is anti Russia, and one is for the free market. So this is how. तो बेचारे की हालत खराब है, इसको पता नहीं क्या करना है. So that is the reality. Very well. अच्छा, and last and this thing, that very important thing, Germany has got a soft feeling for Russia. Why? Because if you remember, Eastern Germany was with Russia. Yes. East Germany के जो लोग हैं, अभी भी उनका connect है रशिया के साथ. And it's a sizable population. Second, 27 million Russians died when this Nazi attacked World War II में. 27. तो उनको पछतावा भी है कि हमारे साथ रशिया के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया, हमारे साथ थे. And third very important thing is, again historical ये है, वो चाहते हैं कि भैया रशिया इकोनॉमिकल हमको ये देता है, और बड़ा इकोनॉमिक मार्केट है. For your example, for your information, $27 billion it exports का मार्केट है, और वहां से इंपोर्ट करता है 17 बिलियन वहां से इंपोर्ट करता है, and 27 बिलियन का मार्केट. Doesn't want to lose the market. Exactly. जर्मनी के भाई मर्सिडीज कार सबसे ज्यादा रशिया में और चाइना में बिकता है. Exactly. तो and Germany will not go against. So these are the reasons. Sir, मेरा last question है, because we have few minutes left. $1 million क्वेश्चन, जो आज का करंट सिनेरियो को देखते हुए, तो क्या यूक्रेन या रशिया का वॉर होगा? आपके कंक्लूडेड कमेंट्स. Okay, so this is the $1 million question. You're right. So let's make it $1 billion. It's very difficult. But what I will do is, मैं तुमको इसके हर nuances को तुम्हारे सामने रखता हूँ. Push pull factors, interplay, various factors. And then we'll try to deduce कि इसमें से कुछ मतलब निकलता है कि नहीं. तुम बताना, you will be able to give the answer. Okay. It is as simple as that, and is as complicated as it can be. First, Russia is averse to NATO, bata diya, especially coming in Ukraine. You cannot undermine its supremacy. It doesn't want the red line to cross. Its sphere of influence cannot be reduced. So, and it has demonstrated that it can go to war for that reason. There is a
एंड इसलिए इट हैज फॉर दैट पावर प्रोजेक्शन इसने 1,20,000 सैनिक 1,200 टैंक्स लेके आके बॉर्डर पर खड़ा कर दिया, एज यू सेड. एंड दिस टाइम बिकॉज इसने पहले भी किया था, इसने मार्च अप्रैल 2021 में भी ये खेल खेला था, बट दैट टाइम इट वाज अ ब्लफ बिकॉज सप्लाई लाइन नहीं था. Like when China attacked, if you see in the not try to incur Ladakh में, तो we called it कि bluff, भैया China attack नहीं कर सकता because there is no supply line. कोई supply line तो बना नहीं है. लड़ाई ऐसे थोड़ा होती है. You have to have a logistic line, you have to have hospital, you have to have. So now that is in place. Hospitals are there. Blood supplies also has reached. So it is unlike the March April 20 scene. That means it is a power projection is real. It can. Okay. Third important thing, it has got capability of cyber war and info war to chalu hai hai. Third important thing is US ne mana. US ke Secretary of Defense Lord Austin made a statement and he said कि भैया we agree. तुम्हारे पास ताकत है बॉस. You are capable. And he said that we are convinced that Russia is capable to wage a war against Ukraine. अच्छा, रशिया ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है. जैसे हमने बोला जॉर्जिया में किया, कजाकिस्तान में किया डेमोन्स्ट्रेशन. कजाकिस्तान वाज इन बिटवीन. तो कजाकिस्तान में दिखाया कि भैया तुम ऐसे करोगे, तुम नाटो तो हम CSTO अपना 2000 आदमी भेजा था, CSTO का आदमी भेज दिया था उसने. तो इट कैन. एंड अर्लियर ऑल्सो इट हैज वेज्ड द वॉर. अगर रेड लाइन क्रॉस करोगे तो इट हैज वेज्ड द वॉर. इट हैज हंगरी को इसने अटैक किया था 1956 में, चेकोस्लोवाकिया 1968 में, एंड इट केम इनटू अफगानिस्तान एज लेट एज 1979. तो इट कैन गो फॉर वॉर. मतलब ये ऐसे ये चाइना टाइप नहीं है जो लड़ाई नहीं किया. 1979 वियतनाम के बाद कभी लड़ा नहीं हो यार. इट हैज वेज्ड द वॉर. सो इट इज पावरफुल मिलिटरली. रशिया को अभी क्यों किया? क्राइमिया तो इसने 2014 में ले लिया था, 2014 में. अब क्यों आया भाई इसको करने के लिए 2021 में? सो दिस इज द रीजन दैट दिस इज द मोस्ट अपॉर्चुन मोमेंट टाइम. ये ऐसा है, नक्षत्रों का मेल खेल ऐसा है कि नक्षत्र मीन्स द सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन that see, Russia knows that NATO countries में European Union will not go for a war. It knows. And everybody has been impacted economically impacted because of COVID. Corona. अच्छा, और अगर रशिया का अभी जो मेन सलाहकार, जो मेन पीछे का जो सूत्रधार है वो चाइना है. तो अगर चाइना ने, एक ये बात भी चल रही कि चाइना अगर अटैक कर दे ताइवान को तो यूएस का ध्यान उधर चला जाएगा एंड इट विल बिकम इजी फॉर टू अग्रेस यूक्रेन. सो बट एनीवे दैट वी विल सी कि होता है कि नहीं. अगेन वी विल कंक्लूड दैट. बट अच्छा, एक और फैक्ट, फुल फ्लेजेड वार इज सुसाइडल टू. Economically, it's suicidal for Russia. Economically, it can't fight. It is, or politically, it will be a humiliating retreat. अगर रिट्रीट करता है तो उसका फेस नहीं हो सकता. Come to the America side. Now, the Buddha Biden is already tired. He has flopped internally US में. तुम्हारा inflation is high. You have not been able to stop that. Immigration issue have not been solved with Mexico and other countries. And external Afghanistan में fiasco हो गया. बिल्कुल. It has got no guts to contain China or to look, though ये talking Indo-Pacific में बात कर रहा है, but it's a so Biden is very
afraid. So Biden को ये पता चल रहा है कि भाई it is economically suicidal for Russia, so Russia will not wage war. तो इसको और डराओ. हाँ जी, हाँ जी, it wants to score a brownie point here. बिल्कुल. Okay, and Biden का गुरु कौन है? Biden guru he is being propped up by the Obama and party. Obama. Now the same Obama जिसके टाइम में face loss हुआ था उसको because Crimea was annexed during his time. Yes. So he wants to take revenge कि चलो अब बदला ले लो type. So it's all interplay. So this is the now European Union का हमने बात किया. European Union you have seen it's a divided. It cannot go for war as we said. So what happens now in that European Union can give fund, can give weapon, can give ammunition, can give missiles, but will not fight. Boot on the ground नहीं रखेगा. So therefore, all these leaders now, France is talking with Macron, is talking with Putin. Tomorrow only, UN Security Council में meeting करने जाएंगे बोरिस जॉनसन. तो बोरिस जॉनसन क्यों भाग रहे हैं? Because बोरिस जॉनसन already he is also परेशान Brexit से, he is also परेशान ये पार्टी गेट इनका स्कैंडल कर दिया. So he wants to run away from that. So he wants to get into that कि यार इसको रिजॉल्व कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हाँ जी. Now Russia, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has clarified that we don't want any war. We are ready for dialogue. Only thing our security demand should be met. That means security concerns should be met. No NATO. That means he is giving hint कि भैया मेरे पास आ जाओ और बात कर लो. Now Ukraine, interesting voices are coming from Ukraine. Ukraine के जो present president Mr. Volodymyr Zelensky हैं, he blamed that Western media is hyped this as a war mongering कर रहे हैं. ये कोई war का कोई और इससे हमारा देश की economy is getting hurt. And he is saying कि भैया आप लोग ने अपने डिप्लोमेट को हटा दिया अपने because European countries have taken the diplomat. So because of this the investors are shying away and our country is getting hurt, economically hurt. And he is saying कि यार ये 1,20,000 जितना तो ये फौज तो Moscow had brought last time also in the spring. अगस्त में ले आए थे तो but they have went back. तो चिंता मत करो चले जाएंगे. But at the same time, he is asking NATO ka ship also. So he is giving another fact. 1/3 of Ukraine is Russian, especially in the Donbas region, which is the eastern side. ठीक है. And in fact, Ukraine का मतलब है the borderland. ये last frontier है for Russia ना. It's a border country and इसके इस side Russians ज़्यादा हैं. तो एक तो Russia has got pro-Russian populace here. And then one new young leader, Murayev, he is a TV channel owner also, parliamentarian. इसने pro-Russia statement देना शुरू कर दिया. That means that means अगर change of guard करना हो, तो इसको Zelensky को हटा के we can have a Murayev and Russia can come back. So can come back. बहुत so अच्छा नहीं और एक दो चीज. Because now, before we conclude, we should know what is the game of India and what is the time period. Now, India gave a very try to India gave a statement very categorical that US के साथ इसका strategic partnership है. And India, we have a strategic partnership with US and we have got very privileged partnership with Russia, and we pursue our foreign policy, independent foreign policy, and for defense acquisition and supplies, we are guided by our national interest. So we are saying कि भैया हम बीच में रहेंगे, but रशिया के थोड़ा सा हिंट किया. रशिया समझ गया. रशिया को चाइना ने बोला कि भैया देख ले इंडिया अगर लड़ाई हुआ तो इंडिया पता नहीं कहाँ जाएगा. So Russia has done one thing. Putin has said कि he will go to Pakistan next time. So countervailing forces. See, उसने भी अपनी चाल चल दिया. All said and done.
रशिया इज रेडी फॉर नेगोशिएशन, दे आर रनिंग। अभी 2 वीक टाइम है अपने पास, नेगोशिएशन 90% हो जाना चाहिए, बिकॉज जो माहौल बन रहा है, एंड फरवरी 20 तक कुछ नहीं होगा। वाई फरवरी 20? बिकॉज विंटर ओलंपिक इज इन बीजिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th February to 20th February। ओह या, दैट्स ट्रू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो ये ड्रामा तब तक के अभी लिए अभी बंद है, एंड after this drama the Chinese will have the last laugh, because they will emerge as a superpower again। thank you। yes, जय हिंद। yeah, that's true sir and very well explained। तो अभी तो आपके कंक्लूड पॉइंट्स ऐसा ही लगता है कि हमें अभी वेट एंड वॉच देखना पड़ेगा, करना yes, पड़ेगा। इट्स wait एज and सिंपल एज wait and watch, and negotiation may be done। नेगोशिएशन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप मेरे शो में आए और हमारे दर्शकों के लिए इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, प्रकाश डाला हर बिंदुओं पर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जय हिंद।